So all of you should have revised, you should have gone through previous lecture. So which are the major arteries supplying CNS? We have seen spinal cord. So 3, 1 plus 2. One artery on the front. Let's quickly revise. One artery in the front, that is anterior spinal. Two arteries on the back, right and left posterior spinal. Okay. Then 6 longitudinal channels of vein similar to artery. One anteromedian and posteromedian in the median plane, and then anterolateral and posterolateral on both sides. So these are the arteries and veins of spinal cord, and they are dividing into, on the lateral side, they are dividing into these radicular branches. Radicular means root, that is ventral root, dorsal root, anterior radicular, posterior radicular, and this gray matter and white matter of spinal cord, they are divided in arterial zone. In the center, central branches; in the periphery, pial plexus, okay, and in the center, mixed zone between these two. So this is pattern of distribution. One of the large arteries known as arteria radicularis magna, that is one of the large artery of anterior branch, right? Its position is variable and it will supply, because it is large, it will supply lower two-third of spinal cord, that is lumbar and sacral region. And the pial plexus surrounding this outer part is known as arteria vasocorona. Similar pial plexus of the veins is known as venous vasocorona. So arteria vasocorona and venous vasocorona is plexus of small vessels supplying periphery. These plexuses are interconnected by this vasocorona mechanism. So that we have seen in the earlier lectures. We have also seen vertebral arteries and internal carotid. All of you know two major arteries. This is internal carotid. It is dividing from the common carotid. It has four parts. You have learned in the head and neck: cervical part, petrous part, cavernous part, and cerebral part. It is described in different chapters, so you have to merge all the chapters and make a total note of internal carotid. Okay, cervical, petrous, cavernous, and cerebral. Petrous, that is near to petrous temporal bone. Cavernous is in the lateral and upper wall of cavernous sinus, and cerebral, that is after it divides into cerebral branches. It supplies base of the brain and other areas. Similarly, here from here you have vertebral artery. It has again four parts: from origin to C6, C6 to C2, C2, C1, and above C1. Two-sided vertebral, right and left, will unite to form basilar artery. Then again it bifurcates into another branches. So, and when it becomes basilar, there are two spinal arteries descending. See, this is vertebral artery, right and left. Here it is united and form basilar artery. So before this union, these two branches come down, they are forming anterior spinal artery. Okay. Uh, and from this basilar artery, you will have this superior cerebellar, posterior cerebral, these small numerous pontine branches,
and here AICA, PICA. So AICA comes from the basilar and PICA before it becomes basilar. So PICA comes from vertebral. Again, anterior inferior comes from basilar, posterior inferior comes from vertebral. These are the two major arteries supplying most of the brainstem and most of cerebellum, that is your hindbrain. And other branches we have seen, that is labyrinthine, that is end artery, right? Because when it is obstructed, end artery is obstructed, there is immediate necrosis of the tissue. And the cerebral branches, they are terminal branches, we have seen. Then we have also seen the area of lesion in case of superior cerebellar artery, that means midbrain area is lost. So lateral midbrain syndrome, right? This area is lost in superior cerebellar. Similarly, for anterior inferior cerebellar, this lateral part is lost from the pons, right? And in another part of pons, you have posterior inferior cerebellar. Okay, so in that also this lateral part is lost. In short, in midbrain and pons, a lateral area is lost first. Okay, but as and when the necrosis will spread, it will involve further medial areas. In case of medulla, we have seen that two parts, medial medullary syndrome and lateral medullary syndrome. They are supplied by two different arteries. So two types of presentation we have seen. This is medial medullary syndrome, okay, and this is lateral medullary syndrome. You have to remember the section and nuclei accordingly. So now we will proceed to internal carotid. So you should read all the parts of internal carotid from head and neck, and the fourth part, third and fourth, that is cavernous and cerebral. You can see course of internal carotid, it is running vertically upwards. From the base of the brain, it enters in the carotid canal and foramen lacerum. This area, this cut portion of the bone, it is your foramen lacerum. It is in direct contact with this and it will pass from carotid canal. That means it is forming a loop, entering in carotid canal and then entering in foramen lacerum. So that will form a sapid band, that is known as siphon or carotid siphon. It is a sapid loop of internal carotid artery which is known as carotid siphon. You have to see this in cranial x-rays, x-rays of the skull. This in angiogram of the brain, this siphon is to be identified. If we have such x-rays available in the exams, you can be asked in the viva also. So you should better remember carotid siphon. Similarly, in arch of aorta, you have seen this impression of arch of aorta, right? And pulmonary vasculature, bronchovascular markings. These are the things to be seen in angiogram. So after this foramen lacerum, it will run in the lateral and upper wall of carotid sinus. So then it is giving cerebral branches. So branches, they are ophthalmic artery, posterior communicating, anterior choroidal, anterior cerebral, middle cerebral. So we will see all this in this arterial circle. So this is important short note for final exams. Circle of Willis. Circle of Willis is this particular area.
This is circle of Willis. So we will see how it is formed. यहाँ से शुरू करते हैं. Vertebral united form basilar, right? From basilar, next this is posterior cerebral artery. This whole is posterior cerebral. यहाँ पे नहीं दिखाया, यहाँ पे काट के दिखाया है, ठीक है. So three main arteries: posterior cerebral, middle cerebral and anterior cerebral. इनका लोकेशन इम्पोर्टेंट है, इनको हमें जोड़ना है. Again, this is posterior cerebral, this is middle cerebral, this is anterior cerebral. So this anterior and middle, यहाँ पे देखो, this is fourth part of internal carotid, cerebral part. So from cerebral part of internal carotid, two major arteries, anterior cerebral and middle cerebral, they origin. And this posterior cerebral is coming from this basilar artery. Now we have to connect this. So this is anterior cerebral, both right and left. Here they are connected by anterior communicating artery. ऐसे ही इनको कनेक्ट करो. Middle cerebral and posterior cerebral, they are connected by posterior communicating artery. Again, सबसे पहले from cerebral part of internal carotid, two branches, anterior cerebral, middle cerebral, and from basilar artery, third branch, that is posterior cerebral. Now we will connect these two, both sided right and left anterior cerebral, connected by anterior communicating, and here middle plus posterior cerebral connected by posterior communicating artery. ओके, तो देखो अपना सर्कल खत्म हो गया. बेसिलर, posterior cerebral, posterior communicating, middle cerebral, anterior communicating, anterior cerebral, opposite side anterior cerebral, opposite middle cerebral, opposite posterior communicating, opposite posterior cerebral. ऐसे घूम के पूरा सर्कल बनता है. In the exams you have to describe these branches and connections. So this is circle of Willis. So when any particular branch is obstructed, it will provide collateral circulation and it will stop the brain from getting ischemic. So this is advantage of collateral circulation. So you better practice yourself to draw. This is base of brain view, right? We are viewing from the downwards. So in some of the textbook, if you remove this brain and draw only this circle, so this is spinal diagram. You have to imagine all areas of the brain. This is vertebral, basilar, posterior cerebral, right and left, posterior communicating, middle cerebral, anterior cerebral, and anterior communicating. Right? This is a hexagonal circle. So now branches of the circle of Willis. If you see, let's see small branches from this area, anterior and posterior communicating. They are giving small branches to inside and outside the circle. So these are the branches inside the circle. These are the branches outside the circle. Okay. So we have four different regions: AM, AL, PM, PL. Anteromedial group,
anterolateral group, posteromedial group, posterolateral group. Again, anteromedial group of arteries origin from anterior cerebral inside circle. Anterolateral group of arteries origin from middle cerebral outside circle. Posteromedial group of capillaries origin from posterior cerebral inside circle. Posterolateral group of blood vessels origin from posterior cerebral backwards outside circle. Other branches here we have seen in earlier lecture. Okay, superior cerebellar, pontine branches, and one of the labyrinthine branch from this union, and then AICA, PICA. So they are not part of circle of Willis. Okay, they are from the vertebral and basilar. And in circle of Willis, you have to describe only formation and branches. So you just recap. Circle of Willis, also known as circulus arteriosus. Circulus arteriosus. Okay, that is hexagonal arterial circle. और इसकी लोकेशन क्या है तो कि इंटर पेडंकुलर फोसा. पेडंकल मीन्स superior cerebral peduncles in the midbrain, just anterior to tegmentum. This is pons and inside this is midbrain. So here to crus cerebri, anterior part of cerebral peduncle, और इसके बीच में यहाँ पे जो गैप है that is interpeduncular fossa. So formation, anterior communicating, anterior cerebral, posterior communicating and posterior cerebral. This circle will equalize the blood flow and provide collateral. In case of ischemia or infarction, it will compensate the blood supply. Branches of this, they are divided in CCC, cortical, central, and choroidal. The name itself suggests the area. Cortical is cerebral cortical area, central, that is inside white matter, okay, diencephalon, and choroidal, that is choroid plexus, that is in the ventricles. So cerebral or cortical, central, and choroidal, these are the three groups of branches in circle of Willis. Cortical, they are known as external, they will run on the cerebrum, they will anastomose and connect the adjacent areas, that is association cortex. Central will go in the white matter and supply all the parts of diencephalon. It will also supply internal capsule. अब आपको पता है इंटरनल कैप्सूल में सभी डिसेंडिंग फाइबर्स जाते हैं. All corticospinal and corticonuclear, they will pass from internal capsule. So if there is obstruction or hemorrhage to these branches, all the corticospinal fibers are lost and you will have applied anatomy in the form of plagia. Hemiplegia, paraplegia, monoplegia and quadriplegia. All four types of descending corticospinal palsy. Okay. So cortical branches के नाम है three cerebral, simple नाम, anterior cerebral, middle cerebral, posterior cerebral. These are the three main cortical branches. This is area of territory, anterior cerebral,
See, this is superolateral surface. Superolateral means this is whole lateral surface, this is whole medial surface, और नीचे यहाँ पे inferior, तो inferior surface का दूसरा नाम है tentorial surface. So this is medial surface, this is tentorial or inferior surface, and this whole is superolateral. So this is area of anterior cerebral in the superolateral, and in the medial view it will supply majority parts. Most of the medial cerebral cortex. Remember all these territories. In case of obstruction or thrombosis, these territories will be affected. So whole of the medial surface and upper margin of superolateral surface is provided by anterior cerebral. Then most of the superolateral surface provided by middle cerebral, and some area of tentorial surface, frontal lobe, is supplied by middle cerebral. Remaining part, it is posterior part of tentorial surface and posterior part of this inferior superolateral surface की inferior boundary, that is supplied by posterior cerebral artery. नीचे का भी डायग्राम ऐसा ही है, तो आप बना सकते हैं अपने हिसाब से. anterior cerebral, middle cerebral and posterior cerebral. Posterior 2/3 supplied by posterior cerebral, and anterior 1/3 supplied by middle and anterior cerebral. And this is your circle of Willis. चलो नाम anterior cerebral, anterior communicating, यहाँ से होगी middle cerebral, posterior communicating, posterior cerebral and basilar. सेंट्रल ब्रांचेज ये जाएगी वाइट मैटर में, तो इसमें हमने ग्रुप बनाए थे AM, AL, PM, PL. ओके, तो जिसमें AL होता है दैट इज आउटसाइड लेटरल ग्रुप, दोनों साइड के लेटरल ग्रुप, दे आर टू, एंटीरोलेटरल टू, पोस्टीरोलेटरल टू. ओके, तो दोनों लेटरल टू कैसे हुए? दिस इज AL, दिस इज PL. दैट मीन्स ये राइट साइड का और ये लेफ्ट साइड का, ये राइट साइड लेफ्ट साइड, दैट इज लेटरल ग्रुप. तो लेटरल साइड तो दो साइड हो गई, तो इसका मतलब चार ग्रुप हो जाएंगे. और मीडियल साइड एक ही है कॉमन, तो इसमें एक ही ग्रुप है एंटीरोमीडियल एंड एंटीरोलेटरल. कायदे से देखा जाए तो यहाँ पे भी एंटीरोमीडियल हो सकता है, ठीक है, पर इन्होंने इस पूरे को एक नाम दे दिया, पूरे को एंटीरोमीडियल नाम दे दिया, इस पूरे को it is posтерomedial. And in this it is right anterolateral, left anterolateral, right posterolateral, left posterolateral. You can draw these branches here. Okay, you must draw. So they are branches of central group, anteromedial, anterolateral. अब इसमें anterolateral में important two division. Anterolateral further divide in two sets, medial striate and lateral striate. Striate मतलब corpus striatum. Okay, so it will supply corpus striatum, that is caudate nucleus and lentiform nucleus. So you can draw this diagram in this manner. This is your middle cerebral, और इसमें से यहाँ पे एंटीरोलेटरल ग्रुप, ठीक है, टू, that is medial group, medial striate, lateral striate, they are going to corpus striatum.
This is head of coated nucleus, this is putamen, this is globus pallidus और उसके बीच में internal capsule. So these are all medial and lateral striate branches. इसमें से एक का नाम है lateral striate branch जो सबसे बड़ी है, larger than others. It is called Charcot's artery. Charcot's artery of cerebral hemorrhage. Lateral striate branch larger than others. इसमें हमने दो ग्रुप बनाए. ये पूरा एंटीरोलैटरल ग्रुप है. इसके भी दो पार्ट, मीडियल एंड लेटरल स्ट्राइट. स्ट्राइट मतलब कॉर्पस स्ट्राइटम. मीडियल स्ट्राइट ग्रुप एंड लेटरल स्ट्राइट ग्रुप. तो इसमें लेटरल स्ट्राइट की एक ब्रांच जो सबसे बड़ी है, दैट इज नोन एज चारकोट्स आर्टरी ऑफ सेरिब्रल हेमरेज. इट इज वल्नरेबल टू हेमरेज. बाकी सब तो सिंपल है. तीसरा ग्रुप है कोरोइडल. तो नेचुरली इट विल सप्लाई कोरोइड प्लेक्सस. तो कोरोइड प्लेक्सस कहाँ कहाँ होता है? राइट एंड लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल. So choroid plexus has contribution of capillaries. It is provided by choroidal branches. So we have anterior choroidal, posterior choroidal, and PICA will also give choroidal branches, but this PICA is on the back posterior aspect, so it will supply fourth ventricle. और आगे के जो दोनों है, it will be supplied by these two, anterior choroidal and posterior choroidal. Okay. So it will supply inferior horn of lateral ventricle. This posterior will supply in posterior horn plus third ventricle. Okay, and this will supply PICA will supply fourth ventricle. So this is lateral view. We are viewing from the left lateral side. So you can compare from this posterior cerebral and this cerebral part of internal carotid. You will have these choroidal branches. This is our choroid plexus. यहाँ पे भी होगा फोर्थ वेंट्रिकल में. तो these are the choroidal branches. Anterior choroid will supply lateral ventricle and posterior choroidal will supply third ventricle. So similarly you can see cerebellum. तो इसमें हमने देखा cerebellum में तीन major branches, superior cerebellar, PICA and PICA. Now all of you know blood-brain barrier. This is important topic, lifetime important. You have to make a list of other barriers in the body. Blood-air barrier in the lungs, blood CSF barrier, then blood ganglion barrier in the intestine, okay, blood thymic barrier in the thymus gland. So you should make a list of all these barriers. The pattern will be similar. Capillary endothelium and basement membrane is common. ठीक है, सभी बैरियर में तीन कंपोनेंट होते हैं, उसमें से दो कंपोनेंट कॉमन है, कैपिलरी एंडोथेलियल सेल एंड इट्स बेसमेंट मेम्ब्रेन. तीसरा जो टिश्यू का नाम बदलता है उसमें से स्पेशल टिश्यू के सेल होते हैं, दैट विल बी थर्ड कंपोनेंट. सो बेसिक स्ट्रक्चर इज द सेम. दिस इज कैपिलरी ल्यूमेन. okay, the diameter of capillary is slightly less than diameter of RBC, you know from physiology. So this is your capillary endothelial cell. It is a single layer of epithelium. ये है उसका basement membrane. So these are the two components common in all barrier. Capillary endothelial cell. These cells are joined by
टाइट जंक्शन, ये सेल का टाइट जंक्शन है, इसको यहाँ पे जूम करके दिखाया है। तो दिस इज प्रोटीन्स, दे आर joined by tight junction proteins, the cell membranes. Okay, so this is allowing selective substances to cross. ठीक है, तीसरा सब्सटेंस जो है, तीसरा कंपोनेंट मीन्स कैपिलरी एंडोथेलियल सेल, उसका टाइट जंक्शन, ये लेयर 1 में आ गया। देन लेयर 2 में बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ दिस कैपिलरी एंडोथेलियम। देन थर्ड कंपोनेंट इज जो भी टिश्यू है उसका सेल ले लेना है। यहाँ पे नर्वस टिश्यू है तो नर्वस टिश्यू का सेल एस्ट्रोसाइट, लंग है तो न्यूमोसाइट, थाइमस है तो थाइमोसाइट, ठीक है, इंटेस्टिन का सेल है तो वो उसका म्यूकोजा जो भी है। दे विल सेंड फूड प्रोसेसेस, इस एस्ट्रोसाइट इज सेंडिंग फूड प्रोसेस, तो ये फूड प्रोसेस भी एक दूसरे के साथ ऐसे गैप जंक्शन से जुड़ती है। So here inside it is a tight junction and outside it is a gap junction. So this is potential space. It will open up only when required. Okay, according to receptor and molecule interaction. So this is your blood-brain barrier. इसका दूसरा नाम है hematoencephalic barrier. So this is formed by these three capillary endothelium, basement membrane and tissue के जो भी सेल है एस्ट्रोसाइट्स। कुछ एरिया डिवॉइड ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर है, तो ये तो हमें याद रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से कुछ भी आतंकवादी अंदर जा सकता है या तो अंदर से कोई बाहर जा सकता है। तो ये है पीनियल बॉडी, हाइपोफिसिस सेरेब्री, दैट इज पिट्यूटरी, कोरोइड प्लेक्सस, एरिया पोस्ट्रेमा इन द फोर्थ वेंट्रिकल, और भी काफ़ी एरिया है जो यहाँ पे लिखे नहीं हैं। तो यू कैन मेक अ लिस्ट व्हेनेवर यू फाइंड दिस रेफरेंसेस। This list is important for the purpose of drugs, okay, drugs and foreign substance, bacteria and virus. When there is no blood-brain barrier, these substances can come and go easily, right? So function of blood-brain barrier is it will modulate the entry of metabolic substance, it will allow nutrition and required substances to selectively pass, it will restrict larger substances and toxin substances, okay, and it will block certain molecules, noradrenaline, adrenaline, it will block certain drugs, penicillin, thiopenton, it will allow certain drugs, atropine, chloramphenicol, tetracycline, sulfa, all these drugs you will learn in the pharmacology in second year. You have to remember the names of all crossing and not crossing drugs. Similar list you will have in placenta, in the uterus. So which substances can cross placenta and which cannot? The table is very much larger. So this property is known as selective permeability. Okay, allowing certain substances and preventing certain substances is known as selective permeability. It is also providing ion balance by pump mechanism. It is also providing hormones. So this is function of blood-brain barrier. And outside this barrier we will have this perivascular species, also known as Virchow-Robin species. Okay, they are simply extensions of the subarachnoid space. subarachnoid space की जो भी प्रॉपर्टी है वो इसको लागू कर देंगे, ठीक है, और इसमें जो भी फिजियोलॉजी है ये आप फिजियोलॉजी का रेफरेंस लेके मैच कर सकते हैं, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस डिटेल ऑफ आयोनिक फिजियोलॉजी। क्लिनिकल एनाटॉमी, तो जहाँ पे भी ब्लड वेसल आती है तो अपना दिमाग चलता है कि भाई थ्रोम्बोसिस हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है या हेमरेज हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन दी हुई है,
थ्रोम्बोसिस ऑफ लेटरल स्ट्राइड ब्रांच दैट इज चारकोट्स आर्टरी जो भी हमने देखा, इसमें होगा एक्सेप्ट लोअर लिम्ब ऑपोजिट हेमीप्लेजिया, ऑपोजिट हेमीप्लेजिया एक्सेप्ट लोअर लिम्ब। ठीक है, क्योंकि इंटरनल कैप्सूल का वो पर्टिकुलर फाइबर जो कॉन्ट्रालेटरल मोटर सप्लाई देता है दैट इज डैमेज। हेमीप्लेजिया, सबसे पहले हम चारों प्लेजिया को याद कर लेते हैं। हेमीप्लेजिया मीन्स हाफ ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी में हम दो पार्ट रखते हैं, हेड एंड नेक प्लस लोअर हाफ, ट्रंक एंड लोअर लिम्ब। ठीक है, तो हेड एंड नेक को अलग करेंगे और ट्रंक एंड लोअर लिम्ब को अलग करेंगे। ओके, दिस इज नर्वस सप्लाई पर्सपेक्टिव, राइट? So hemiplegia means head and neck plus trunk and lower limb, both of the same side. That is hemiplegia, either right or left. Then paraplegia, that is only lower limbs. Paraplegia means only lower limbs. That is right and left lower limb. Then monoplegia. Mono means any of the four limb. राइट अपर, राइट लोअर, लेफ्ट अपर, लेफ्ट लोअर, चारों में से कोई भी एक है, दैट इज कॉल्ड मोनोप्लेजिया। सो मोनोप्लेजिया कैन बी ऑफ फोर टाइप्स। सो हेमीप्लेजिया कैन बी ऑफ टू टाइप्स, राइट एंड लेफ्ट। पैराप्लेजिया कैन बी ओनली वन, दैट इज लोअर लिम्ब ओनली। मोनोप्लेजिया कैन बी फोर and quadriplegia can be one. Quadri means all four together. Again, hemiplegia, that is either right or left half of the body is gone. Paraplegia, both lower limb is gone. Monoplegia, any of the limb, one limb is gone. And quadriplegia, that is all four gone together. So here lenticulostriate branches of middle cerebral. Cerebral thrombosis किसका? तो कि मिडल सेरिब्रल आर्टरी, मेन ब्रांच जो है उसका ही थ्रोम्बोसिस हो चला, तो उसमें वी विल हैव हेमीप्लेजिया, दैट इज हेड एंड नेक प्लस ट्रंक प्लस लोअर लिम्ब ऑफ एनी वन साइड। तो ये हुआ चारकोट्स आर्टरी ऑफ सेरिब्रल हेमरेज। ठीक है, एक दूसरा नाम है ह्यूबनर्स रिकरेंट ब्रांच ऑफ एंटीरियर सेरिब्रल। ये बंदा किसका था? ये मिडल सेरिब्रल का था। अब इसका दूसरा एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, उसमें से एक नाम आता है ह्यूबनर्स रिकरेंट ब्रांच। ठीक है, जो सिर्फ एंटीरियर साइड को सप्लाई करता है, एंटीरियर लिम्ब एंड जेनो ऑफ इंटरनल कैप्सूल। तो उसमें थोड़ा फायदा होगा, ओनली अपर मोनोप्लेजिया, मोनोप्लेजिया ऑफ ओनली अपर लिम्ब। और ये इंटीरियर कम्युनिकेटिंग जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एनास्टोमोसिस से क्रॉस फ्लो मिल जाएगा, तो यहाँ पे कोई प्लेजिया नहीं होगा इन केस ऑफ एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी लॉस। ठीक है, और एक और कंडीशन है डिस्टल ओक्लूजन। डिस्टल पार्ट ऑफ दिस आर्टरी, सिर्फ डिस्टल पार्ट अगर आता है तो इसमें इट इज सप्लाइंग अवर पेरासेंट्रल लोब्यूल। पेरासेंट्रल लोब्यूल you have to see on the medial surface of cerebral hemisphere. Paracentral lobule, superior middle part of medial surface, that is urinary bladder. Defecation and micturition is controlled by this area. So it is supplied by distal part of this artery. तो इसमें होगा incontinence, urinary bladder problem. सिर्फ लोअर लिम्ब मोनोप्लेजिया है, तो दैट इज पेरासेंट्रल आर्टरी, दैट इज लास्ट और टर्मिनल ब्रांच ऑफ एंटीरियर सेरिब्रल। ओके,
Now we will see veins of the brain. So before veins, we have to revise all the sinuses, cranial venous sinuses. Okay, so you can see here these cranial venous sinuses, they are dural folds, एंडोस्टियल लेयर एंड मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर, उसके बीच में जो जगह बनती है दैट इज योर क्रेनियल वीनस साइनस. ओके, तो सबके नाम सुपीरियर सजाइटल, इंफीरियर सजाइटल, ट्रांसवर्स साइनस, ये चारों मिलते हैं. सुपीरियर सजाइटल, राइट एंड लेफ्ट ट्रांसवर्स, फिर स्ट्रेट साइनस यहाँ पे, और नीचे से ऑक्सीपिटल साइनस, ये सब मिलते हैं. उस जगह का नाम है कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनसिस. इसका दूसरा नाम है टोर्क्यूला ऑफ हीरोफिलस, टोर्क्यूला ऑफ हीरोफिलस. इट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनसिस. कौन से? सुपीरियर सजाइटल, स्ट्रेट, राइट ट्रांसवर्स, लेफ्ट ट्रांसवर्स एंड ऑक्सीपिटल. दिस एरिया इज योर इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस इन द स्कल. फिर ट्रांसवर्स साइनस यहाँ पे कंटिन्यू होगा सिग्मोइड साइनस, then it will go in the jugular foramen and become internal jugular vein, and from this, before it terminates, you will have superior petrosal sinus and inferior petrosal sinus. Both of these will drain in the cavernous sinus around pituitary gland. Similar view, open view of the skull, transverse sinus, straight sinus, and this is your confluence. Transverse sinus becoming sigmoid, it becoming internal jugular in the jugular foramen. और दिस इज सुपीरियर एंड इंफीरियर पेट्रोजल, दोनों पेट्रस टेम्पोरल बोन से मिलके दे आर फॉर्मिंग बेसिलर venous plexus. Right and left sided all small multiple sinuses. Here on the clivus of the skull it is forming basilar venous plexus, and on bilateral side right and left they are draining in cavernous sinus. And this is lesser wing of sphenoid, it is lodging sphenoparietal sinus. And it this right and left cavernous, they are communicating around pituitary, anterior side of pituitary and posterior side of pituitary. This communication is known as intercavernous sinus, anterior and posterior intercavernous sinus. So our veins will have similar properties. पूरे बॉडी में हमने देखा था कि वेन में वाल्व होते हैं, वेन में ट्यूनिका मीडिया और इंटीमा होता है. तो ब्रेन की वेन में ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. Characteristics of the veins in the brain: devoid of muscle, devoid of valve, no muscles, no smooth muscles and no endothelial folds. ठीक है. तो इसका मतलब ये बिल्कुल ड्यूरल विनस साइनस जैसा ही हो गया. हेलो. ओके, so these veins have no valves and no muscles. और कुछ का डायरेक्शन ऑफ फ्लो अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ फ्लो in the sinus. ठीक है. Some of the veins will drain in the opposite direction of sinus flow to maintain patency. और इसमें भी हमारे पास ऐसे ही ग्रुप है, सबका नाम है सेरिब्रल वेन. कुछ भी याद नहीं आता तो सेरिब्रल वेन. तो ये है सुपीरियर सेरिब्रल, मिडल सेरिब्रल and inferior cerebral. Okay, again superior cerebral, middle cerebral and inferior cerebral.
मिडल सेरिब्रल में दो पार्ट है, सुपरफिशियल एंड डीप। ओके, सुपरफिशियल एंड डीप। सुपरफिशियल, they are draining superior-lateral surface. मिडल, उसमें दो पार्ट है, सुपरफिशियल एंड डीप। ओके, inferior cerebral, they are draining base of the brain, and anterior cerebral they will drain only frontal lobe। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जरा देख लेते हैं। ये पोस्टीरियर पार्ट है, तो दिस इज स्ट्रेट साइनस। ठीक है, वी आर व्यूइंग फ्रॉम द लेफ्ट लेटरल साइड सजाइटल सेक्शन। तो स्ट्रेट साइनस, ग्रेट सेरिब्रल वेन, ग्रेट सेरिब्रल वेन, इंटरनल सेरिब्रल वेन, वेन में हमें फॉर्मेशन करके बड़ी वेन में आना होता है, तो ये आगे से यूनाइट कर करके यहाँ पे इकट्ठा होना है। तो पहले हम देख लेते हैं इंटरनल सेरिब्रल वेन। दिस इज बेसल वेन, इसको साइंटिस्ट का नाम देते हैं बेसल वेन ऑफ रोजेंथाल। ठीक है, तो बेसल वेन, एंटीरियर सेरिब्रल वेन और इंटरनल सेरिब्रल जो है, इसमें वी हैव मल्टीपल ट्रिब्यूटरीज, एंटीरियर टर्मिनल, एंटीरियर सेप्टल, ये होगा लेमिना टर्मिनालिस, ये होगा सेप्टम पेलुसिडम, एंटीरियर सेप्टल वेन एंड एंटीरियर टर्मिनल वेन। यहाँ पे होगा हेड ऑफ कोडेट न्यूक्लियस, कॉर्पस स्ट्राइटम, तो कोडेट वेन्स एंड स्ट्राइट वेन्स। ठीक है, जब भी वेंट्रिकल होगा तो कोरोइडल वेन, कोडेट वेन, स्ट्राइट वेन एंड कोरोइडल वेन, टिश्यू के ऊपर से नाम लेता है। पोस्टियर टर्मिनल वेन and anterior terminal vein, that is last tributary, okay, terminal parts. So from here these veins start from anterior and posterior terminal vein, caudate vein, striate vein and choroidal vein, septal vein, ये सब मिलके बन गया internal cerebral vein। So internal cerebral vein is union of terminal vein, striate vein, choroidal, caudate and septal अकॉर्डिंग टू टिश्यू, जो एरिया का नाम है उसके नाम पे। ठीक है, फिर दिस इंटरनल सेरिब्रल ऑफ राइट एंड लेफ्ट दे विल मर्ज टू फॉर्म ग्रेट सेरिब्रल वेन, इसका नाम है गैलन, ग्रेट सेरिब्रल वेन ऑफ गैलन। ठीक है, तो दैट इज राइट इंटरनल सेरिब्रल, लेफ्ट इंटरनल सेरिब्रल प्लस राइट एंड लेफ्ट बेसल वेन, दे विल मर्ज टू फॉर्म ग्रेट सेरिब्रल वेन। You can see here transverse section viewed from above. So this is our straight sinus and this is our great cerebral vein। इसमें from lower aspect you have basal vein and from the front you have internal cerebral vein, and here you can see septal vein, caudate vein and this thalamostriate vein and choroid vein। थैलेमोस्ट्राइट वेन हमको पता है दो स्ट्रक्चर साथ में चलते थे, स्ट्राया टर्मिनालिस and thalamostriate vein on the upper surface of thalamus। Okay, and in the frontal lobe in between these two, this is anterior cerebral vein। So that completes most of the things। You should know three types of hemorrhage। Okay, I'll tell you just
when we complete this, when सर्कल ऑफ विलिस हो चुका, ठीक है। हाइपरटेंसिव एंड केफेलोपैथी। Hypertension means high blood pressure. So when there is high blood pressure, this capillary is sometimes ruptured, and there, this cerebral hemorrhage gives rise to encephalopathy. Okay. So elevation of diastolic blood pressure, this is important. नीचे का जो ब्लड प्रेशर है जब वो बढ़ जाता है तो देर आर हाई चांसेस ऑफ हाइपरटेंसिव हेमरेज। ओके, इसका नाम है हाइपरटेंसिव हेमरेज। व्हेन दिस हेमरेज हैपन्स इन द ब्रेन टिश्यू इट इज कॉल्ड एनकेफेलोपैथी। तो इसकी एक कंडीशन है डायलेटेशन एन्यूरिज्म। ट्यूनिका मीडिया गेट्स एनलार्ज इन द blood vessels, that is called Berry's aneurysm. Berry is a name of fruit. So in the circle of Willis, when there is variegated dilatations, tortuosity, multiple small lesions, that is called Berry's aneurysm. This dilatation will rupture, form hemorrhage, that is cerebral hemorrhage, and gives rise to encephalopathy. Group of symptoms due to different arteries hemorrhage and different areas of blood loss. फिर इसमें sympathetic innervation होता है in the arteries. All of you know main arteries they are running sympathetic plexuses. So in case of sympathetic dysfunction or imbalance between ANS, these will go in prolonged spasm. Okay, spasmodic contraction of smooth muscles of arteries due to autonomic imbalance. तो इसमें ब्लड सप्लाई प्लस माइनस होता है, ब्लड का परफ्यूजन चेंज हो जाता है, तो समटाइम्स it can damage tissue. So this completes your lecture. I was talking about 4 types of hemorrhage. All of you should remember these 4 types of hemorrhage. Reference is 3 durameters, 3 meninges of the brain. Okay, actually there is 4 क्योंकि हमारे पास ड्यूरा 2 है, तो 2 ड्यूरा और बाकी के 2 मिला के 4 मेनिंजियल लेयर्स हमारे पास है। तो हमारे पास 4 टाइप के हेमरेज है, एक्स्ट्रा ड्यूरल, सब ड्यूरल, सब एरेक्नॉइड एंड इंट्रा सेरिब्रल और इंट्रा न्यूरल। ओके, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड अगेन, एक्स्ट्रा ड्यूरल, सब ड्यूरल, सब एरेक्नॉइड एंड इंट्रा न्यूरल और इंट्रा सेरिब्रल। So these 4 different sites will have 4 different types of hemorrhage. So in these 4 hemorrhages, whenever the mass of hemorrhage compress the neural tissue, ठीक है, हेमरेज तो 4 जगह पे है पर चारों में से ड्रेनेज की कैपेसिटी अलग अलग है, ठीक है। वी हैव डिप्लोइक वेन्स इन द स्कल, वी हैव cranial venous sinuses, then we have subarachnoid space CSF, कोरोइड प्लेक्सस और उसके नीचे पाया मेटर और उसका कैपिलरी प्लेक्सस। तो हर एक टिश्यू का अपना नेटवर्क का लेयर है। तो स्पीड ऑफ हेमरेज एंड स्पीड ऑफ ड्रेनिंग बैक द हेमरेज विल बी डिफरेंट in different layers. So rate of recovery and rate of damage will be different. So you have to understand all these 4 types of hemorrhages you will have again in the final year medicine. When you read MRI and CT scan report in any of your relatives, you should see which type of hemorrhage and which location and which artery is damaged. You better develop habit of reading these reports so that your clinical knowledge becomes sound. Okay, thank you. Any questions you can raise after this lecture is over. Dr. Shah sir will take over, so you can take a short break and come back to connect. Dr. Shah sir will continue
his topics. Okay, I am available for 1 2 minutes. You can ask any questions.